Hello students, this video is for grade UKG. So let's get started. In this video, we are going to study 3 different parts. In each part, we will get to know about a different subjects. So there are total 3 different subjects in this sheet. English, Maths and EVS. Let's start with our first subject, English. Fill in the blanks. So what we have to do is, we have to fill up. ओके मिसिंग लेटर्स को फिल करना है. एक लेटर है जो मिसिंग है इन स्पेलिंग्स में एंड वी हैव टू फिल दैट. द फर्स्ट स्पेलिंग इज G-L-D. ओके G-L-D. व्हाट वी विल फिल इन द ब्लैंक. ब्लैंक में क्या फिल करना चाहिए? A-E-I-O-U. क्या फिल करें? O-G-O-L-D. गोल्ड. गोल्ड मतलब सोना. ओके सोना वो नींद वाला सोना नहीं. सोना ये क्या होता है? गोल्ड. गोल्ड में एक मेटल होता है, जैसे ज्वेलरीज होती है ना, गोल्ड की ज्वेलरीज. दैट इज कॉल्ड गोल्ड. G-O-L-D. गोल्ड. नेक्स्ट वर्ड इज T-H-T. ओके डैश में क्या फिल करेंगे? A-E-I-O-U. इनमें से क्या फिल करेंगे? A. वी कैन फिल A. T-H-A-T. दैट. दैट मतलब वो. T-H-A-T. दैट. नेक्स्ट C-R-N. what we can fill in this? O-C-O-R-N. कॉर्न. कॉर्न मतलब क्या होता है? भुट्टा. C-O-R-N. कॉर्न. ओके so in this way you have to fill up these spellings. ओके spellings को fill up करना है by filling the missing letter, and you will fill these letters by using 5 vowels. A-E-I-O-U. A-E-I-O-U का यूज करके ही आपको इन स्पेलिंग्स को कंप्लीट करना है. अंडरस्टूड? या. सो लेट्स रिवाइज सम वर्ड्स. 4 लेटर वर्ड्स. ओके कुछ 4 लेटर वर्ड्स पढ़ते हैं. लाइक G-O-L-D. गोल्ड. T-H-A-T. दैट. C-O-R-N. corn. और हम कह सकते हैं W-A-N-T. want. F-I-R-E. fire. G-O-A-T. goat. G-I-R-L. girl. P-O-O-R. poor. S-E-L-L. sell. sell मतलब बेचना. यहाँ पे S-E-L-L. sell मतलब बेचना. ओके B-L-U-E. blue. in this way you can learn some words. now next section is maths. Join the dots and color the picture. Write the name of the animal in the box given below. What we have to do is, we have to join the dots. Okay, dots को join करना है. नंबर वाइज join करते जाएंगे dots को, और जब हमारा पिक्चर कंप्लीट हो जाएंगे then we will color it also. Okay, इसको कलर भी करेंगे appropriate कलर की यूज से. Appropriate means जो परफेक्ट सुटेबल कलर होगा, that is called appropriate. Okay. and then we have to write the name of the animal also. animal का name भी write करना है. so it will be a duck. D-U-C-K. duck. okay, this is also part of EVS. okay, this is the part of EVS in which we are learning bird name. okay, or animal, you can say bird or animal, both comes in the same category. So you have to match
these dots according to letter wise. Okay, letter wise match करना है. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, so you will match these dots according to the letter. Okay, letter wise match करेंगे as we read the alphabets. Now, let's move to our last section of this sheet, which is of maths. Fill in the missing number. Okay, missing number fill करना है. Or you can say you have to write forward counting. Forward counting write करनी है. Like 11. 11 is given. 11 के बाद के सारे numbers आपको यहाँ पे write करने हैं. जितने blanks दिए हैं उतने numbers आपको यहाँ पे fill करने हैं. After 11. Okay, 11 के बाद से आपको यहाँ पे number fill करने हैं. Like 11, 12, 13, 14, 15 and so on. In this way you will fill the missing numbers. And in the same way you have to complete the rest questions also. I hope you all have understood this sheet very well. If you are having any kind of doubt in any question, you can ask me. Thank you.